Look where I am. It's my old room. This is where I started this whole vlogging thing, and this is where I've been for 2 years. But I am coming back here after what, 8, 9 months. So strange being back here. But yesterday was such a blast, and I think we can finally talk about my sister got engaged. एंड पिछले काफ़ी महीने से when I say कि हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं, इट्स अ इम्पॉर्टेंट ईयर फॉर माई फैमिली, दिस इज़ व्हाट आई मीन. शादी एंड ऑल की प्रेप तो चल रही है. माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड दिस नवंबर, बट जस्ट टू लाइक सरप्राइज हर फॉर हर बर्थडे, हर फियांसे, माई फ्यूचर ब्रदर इन लॉ, डिसाइडेड कि कुछ ऐसा करते हैं कि बर्थडे पार्टी के लिए सरप्राइज़ करते हैं एंड साथ में इंगेजमेंट भी जोड़ देते हैं. सो एट एनी कॉस्ट, इफ़ शी इवन सस्पेक्ट्स कि कोई बर्थडे पार्टी या कुछ होने वाला है. बाय द वे, शी हैड नो आइडिया अबाउट एनीथिंग. शी हैड नो आइडिया ऑफ मी कमिंग हियर. तो पहले तो शी वॉज शॉक टू सी दैट. शी डिडंट इवन नो कि हम नंदी हिल्स जा रहे हैं, वहाँ रुक रहे हैं. एंड देन जब हम वहाँ आ भी गए तो शी थॉट इट्स जस्ट गोना बी द 3 of us एंड दैट्स ऑल. बट देन आगे के सरप्राइजेस अनफोल्ड होते गए. इट वॉज सो अमेजिंग. एंड जब हम आज रिटर्न भी कर रहे थे, थ्रू आउट द वे शी वॉज स्माइलिंग द एंटायर टाइम एंड लाइक जस्ट सो एक्साइटेड एंड हैप्पी. Yeah, that's the kind of happiness everyone in this world deserves. I'm telling you, everyone deserves that. And one day apna bhi aayega, I think, I hope. I am back in my old room and this is so nostalgic. I'm trying not to like feel too much because मैंने तो जनवरी में इधर इस घर को फेयरवेल दे दिया था. Apparently now when my sister will be leaving this house, तो भी मैं यहाँ रहूँगी to bid farewell to this house and this room especially where I spend so much of my time. So as you can see, पीछे बहुत सारी paintings and all लगी हुई है and the room setup is entirely different from what I used to have. Even table पे monitor तक उसने यहाँ रख दिया जबकि मैं उसको उधर लगती थी. This room does not feel like my own anymore because यहाँ पे सारा setup and everything is of my sisters now. I never thought that I'd be here in the first place and none of us ever thought कि कुछ ऐसा होने भी वाला engagement and all. Nobody knew it. I only found it out like literally a day after Rakhi. So what, it's been a week, 10 days since I've known. Last night was amazing. Thankfully no hangovers if I'm being honest. I was sleep deprived एक रात पहले. Definitely मेरी flight बहुत डिले हुई है. कल रात भी बहुत ज़्यादा तो नहीं सोने को मिला. I think like what, 6 hours, but that's still decent enough. So I feel like I've sort of caught up on my sleep. जब वापस आ रहे थे घर तब मेरे को बहुत नींद आई थी कार में, बट नाउ आई एम फाइन. आई लुक लाइक अ मेस इवन दो आई हैव टेकन अ बाथ एंड एवरीथिंग बिकॉज काजल फैल जाता है. आई लुक लाइक अ होमलेस पर्सन. द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ बीइंग हियर इज कुकिंग माई ओन फूड, समथिंग विच आई डोंट डू एनी मोर बिकॉज आई लिव विद माई पेरेंट्स. सो आई आस्क्ड माई सिस्टर कि शी वेंट टू ऑफिस, सो आई आस्क्ड हर कि do you have Maggie at home because I am in no mood to be making chawal, dal and sabji right now. So yeah, we'll do that maybe tomorrow onwards, whatever. But yeah, I am very happy. This is the update I wanted to give. I am here for the next 15-16 days and I want to make the most of it because yeah, this is like my farewell to this city. I don't want to say city. I am very sure like future I am coming back here, but this is definitely farewell to this house and whatever I know about Bangalore so far. So yeah, one thing I definitely like about being here is कि यहाँ फ़ैन तो चलता नहीं है. So जो मुझे घर पे इतनी प्रॉब्लम होती है रिकॉर्डिंग करने में, लाइक ऑडियो इश्यूज़ एंड बहुत स्टैटिक नॉइजेस, फ़ैन नॉइजेस, यहाँ कुछ नहीं आती है. मेरे फ़ोन का माइक्रोफोन कितना अच्छा रिकॉर्ड कर रहा है. जस्ट या दैट्स वन थिंग आई ऑलवेज बी जेलस अबाउट. आई थिंक भाई एक तो आधे टाइम लेंस ही इतना ब्लरी रहता है. इट्स हार्ड टू फिगर आउट. एनीवे, हाय एवरीवन. Oops, no, I didn't want to do that. I want to do this. Dreamy enough. Why do I look so bad? I don't look so bad in real life, but okay, anyway. It's been 1 week since I've been here. Actually more than a week. मैं पिछले Thursday आई थी. Today is the Sunday after that. Confusing, but like more than I think 10 days or something, right? And Bangalore has been so fun this time around.
आई डोंट वॉन्ट टू लीव. सो मैं आई थिंक इतना सोशलाइज और इतना स्पॉन्टेनियस वे में सोशलाइज कभी नहीं करती. इन बैक एट होम तो मेरी सोशल लाइफ ये हो रखी है. एंड यहाँ पे भी इनिशियली आई वॉज लाइक आई विल गेट बोर्ड मैन 2+ weeks. But then I took matter into my own hands because I know my sister is like very busy. She cannot take me anywhere. And she specifically told me I don't have time to babysit you. So I took matter into my own hands. I started making my own plans. And I think मैं इस week alone since like Tuesday or Wednesday मैं 3 बार बाहर जा चुकी हूँ. It's been a lot of fun, trust me. And मैं अभी भी, as you can see, I'm ready to go out. This is the outfit for the day. Yeah, cameras make you look very weird, honestly. So talking about मैं कहाँ गई हूँ. First time I went for a coffee, and then उसके बाद I went yesterday to Indira Nagar. And initially plan था कि we'll have like some nice lunch at a cafe and then उसके बाद बॉब्स बार जाएंगे. But ended up having such a nice time in the cafe itself कि हम लोग गए नहीं बॉब्स बार. And surprisingly कल इंदिरा नगर बहुत ज़्यादा खाली था. I think mostly because कल गणेश चतुर्थी थी, that's why. And belated Ganesh Chaturthi, and by the time this vlog goes up it'll be like Diwali or something. So anyway, yeah, it was nice. Yesterday was especially nice. I had a really good time, like just chatting, and that rarely happens because my social battery बहुत कम है. But the fact that I was able to talk for so long to someone, it was amazing. Today also I think the plan is like कि मोमोज खाने जा रहे हैं. I've heard like there's like a good momos joint in Indira Nagar, तो वहाँ जाएंगे. And then from there it'll be a dinner party, and who knows what kind of a dinner party it's going to be. It could be sober like yesterday's, or it could be something very fun. We'll see. आज सुबह मुझे कबन पार्क जाने का भी इनवाइट आया था, but I had to wake up at 6 and कल मैं 3 बजे सोई थी. Although I came home by like 11:30 something, but मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी उसके बाद, even though I was so tired. आज सुबह मैं इसलिए नहीं उठ पाई, मेरी नींद 11 बजे खुली है सुबह. So anyway, like I'll have fun today. I'm taking my fun side with me today. And yeah, I think throughout the week also I'll try to meet as many people as possible, because so Bangalore this time around has been so much fun कि मेरे को जाने का seriously मन नहीं कर रहा, but it is what it is, I guess. And I'm also like on complete vacation mode right now, तो मैं like literally दिन गिन के घूम रही हूँ, because I know कि when I go back to Delhi, फैमिली के साथ रहो तो बहुत कुछ हो नहीं पाता वैसे भी. एंड एट द सेम टाइम मेरा मन भी ख़त्म हो जाता है वहाँ पे फॉर सम रीज़न, बिकॉज आई थिंक आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इन NCR, बट अब उतने रहे नहीं. सो या तो या बैंगलोर में भी बहुत ज़्यादा बचे नहीं, बहुत लोग मास्टर्स करने चले गए, बट जितने भी हैं उनके साथ आई एम ट्राइंग टू हैव एज मच फन एज आई कैन, एंड लाइक आई एम डिटर्मिन्ड टू इन्जॉय माई टाइम हियर. बिकॉज ऑनेस्टली जब मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ माई बैंगलोर स्टे हियर, आई वॉज स्टार्टिंग टू गेट वेरी बोर्ड, and I'm not gonna lie, also like very depressed, because I was going through a very difficult time, always going through a difficult time. But it was worse back then. So मेरी like socialize करने की energy ख़त्म हो गई थी. I never used to feel like too happy, and I used to get very bored. And जब तुम कहीं full time रहो ना, तो हर समय बाहर घूमने का मन नहीं करता. When you go outside, then you like take that energy with you. So that's what I'm doing right now. And yeah, I ignore the messy bed, but yeah, I will see you probably after I'm back, because my friends are not vloggers and I don't vlog in front of them. But I'll try to take like a few outing videos here and there. I'm going on a bike ride right now, so see ya. It's almost 3 in the night and I look like this. I'm so sleepy and lazy at this point. I think I'm just going to fall asleep right now, but look what a guy gave me. Your girl is popular. I mean, I've always had that effect on guys, but okay, before I just cringe myself out, I'm gonna say good night. But it was a successful night. I had a lot of fun. I'll talk more about it tomorrow. For now,